Hello friends, welcome to my YouTube channel, that is my knowledge park, and today we have to discuss regarding intransitive verb. What I mean to say that in my previous video, transitive verb, what it is and how we have to find out in a particular sentence that transitive verb has been used, that we have studied thoroughly. And today, in my today's video, we have to think regarding only some of the examples of intransitive verbs. In my previous video, we have seen some of the sentences in which the intransitive verbs were shown. मेरे पहले की वीडियो में ट्रांजिटिव वर्ब्स कौन से हैं वो कुछ सेंटेंस के अंदर लिख के बताया गया था. अब मेरे इस वीडियो के अंदर क्या देखना है, व्हाट आर द इंट्रांजिटिव वर्ब्स इन इंग्लिश दैट वी हैव टू सी. अंग्रेजी के अंदर इंट्रांजिटिव वर्ब्स क्या होते हैं हमें वो देखना है. और उसके पहले क्या है, व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये भी देखना बहुत जरूरी है. जैसे कि हम in my previous video I have explained in detail a verb that doesn't need a direct object to complete its meaning. That verb has been called as a transitive verb. Sorry, intransitive verbs, a verb that doesn't need a direct object to complete its meaning, it has been called as an intransitive verb. But what was transitive verb? Transitive verb was always what we can say requiring the direct object, and the action was going to happen on object. But in intransitive verbs, action is not going to happen on object, neither it is required an object or direct object so that it gives its complete meaning. What are the examples? The examples of intransitive verbs only. क्या है बाबा examples? Act है, act करना, सिनेमा के अंदर act किया जाती है, ड्रामा के अंदर act की जाती है. Adopt है, accept करना. I am adopting, understand, but action is going to happen by subject only. After that crawl है, छोटे बच्चे crawl करते हैं. In the same way dance is there. After that erupt is there, escape is there, expand is there, understand, fade is there, murjha jana, flowers generally they fade, understand, after a while when they have been cut off, after that fall itself, understand. In the same way fast, super fast, fast, local, these are the types or nouns of the trains in Mumbai. After that float hai, bahna, pani ke upar bahna, for example cork is there, cap of the pen is there, it floats. After that fly, जैसे कि in my previous video, understand, birds का एक example लिया था fly, तो that is fly. You see my dears, what exactly is the difference in between intransitive and transitive verbs. In my earlier video, what I have explained transitive regarding transitive verb also and regarding intransitive verb also I have explained. Transitive verb क्या होता है, जैसे कि मैं आपको बताया, I kick the ball, ये ट्रांजिटिव वर्ब का एग्जांपल है, किक. बट द बर्ड्स आर फ्लाइंग, ये इंट्रांजिटिव का एग्जांपल है. व्हाई? द एक्शन इज हैपनिंग बाय द सब्जेक्ट बट नॉट इट इज ऑन एनी वन ऑफ द ऑब्जेक्ट. बट इन ट्रांजिटिव वर्ब एक्शन इज हैपनिंग ऑन द ऑब्जेक्ट and without any requirement of the object there is no meaningful transitive verb, that it was in transitive case. But in intransitive case object is not required. Fall is there, fast is there, float is there, fly is there, gallop is there, grow, understand, so grow, crops, understand, crops grow by themselves only. So nobody is going to come over there and someone, what you can say, someone is just raising up to that one of the crops. It is not so. After that jump, understand. After that kneel, just we have to bend, kneel, lead, understand, superior, inferior, lead, understand. Generally that lead is going on whenever, what you can say, the vote counting is there of the voting at that time, lean it is. After that leap, jump on. Nature doesn't proceed by leaps कहा जाता है. Nature जो है, it doesn't, what we can say, proceed by leaps. ये जो निसर्ग है वो कूदी मारते मारते आगे नहीं चलता.
ये कैसा है बाबा, रेगुलर उसका क्या होता है, मूवमेंट चलते रहता है. लर्न, जस्ट आई एम लर्निंग, अंडरस्टैंड, लर्निंग एक्शन इज माइन ओनली. Okay, after that left, I have left. Limp is there, listen is there. March, march towards Delhi. Understand, march towards. In the same way, mourn है, mourn. किसी के मयत के ऊपर क्या किया जाता है, mourn किया जाता है. ये दुख का इजहार किया जाता है, mourn. ऐसा भी नहीं है कि वह चलो कि उनकी तो मौत हो गई, मौत के ऊपर जोर जोर से हंसना. That is not the way. Understand, mourn is there, मुंह है, मुंह itself. Understand. After that panic है, okay, it's a panic condition. After that party, pause, stop. In the same way, peep, झांक के देखना है. अंडरस्टैंड, पिप का मतलब क्या होता है, झांक के देखना है. कैसे होता है, जिनको हम देख रहे हैं उनको भी पता नहीं चलना, और हम जिनको देख रहे हैं वो दूसरे भी हमको नहीं देखना. दैट हैज बीन कॉल्ड एज अ पिपिंग. इट इज अ वेरी फंटास्टिक व्हाट यू कैन से एक्शन ऑफ द मैन, एक्चुअली ऑफ वॉचिंग. अंडरस्टैंड, झांक के देखना. कैसे झांक के देखा जाता है, दूसरों को हम जिनको देख रहे हैं उनको पता नहीं चलना, और ना ही हम किनको देख रहे हैं वो दूसरों को पता नहीं चलना. दैट हैज बीन कॉल्ड एज एन पीपिंग. Pose is their pose. Understand, they give the pose generally celebrities. After that, read है, read. Understand, क्या है read, पढ़ना है. बताओ मेरे चेहरे पे क्या क्या लिखा है. Read is the read. Understand, कैसे पढ़ा जाता है, वही read है बाबा. After that, relax. No any tension at all. No, relax. In the same way, relent है, relentless. After that, rise है, rise. Sun rises. अरे भाई दूसरा, sun rises it is. Natural fact how it is there, sun is a constant and earth is revolve around the sun. But even though sun rising and sun setting, such type of the incidents are going to happen. After that, roll is there, run is there, भागना है. After that, rush है, rush, भीड़ है, भीड़. Understand? Yeah, nowadays in India, not only nowadays, but since from, understand, long back, too much population growth is there in India and population sport is there, and there because of that one there is a rush. Sail है, sail. Understand, sail, mariner. What does sailing है, sailing the boat, sailing the ship. Understand, Titanic, sailing the ship. That it is scream है, scream. Understand, चीखना है, चिल्लाना है. Shake है, to move है, move. Understand, shake well before use कहा जाता है. हर कौन सी भी दवा होती है वो shake well before use कहा जाता है. After that, shout है, जोर से चिल्लाना है. स्कीप है, कूदी मारना है या उसको अवॉइड करना है. स्लाइड है, ग्लाइडिंग एंड स्लाइडिंग. अंडरस्टैंड, ऐसा कहा जाता है. और साउथ अफ्रीका के जंगलों के अंदर क्या है बाबा, ऐसे कैसे स्लाइडिंग एंड ग्लाइडिंग, कैसे क्या है, ऐसे कुछ पर्वत है, उस पर्वत से अंदर जनरली whenever there is a raining at that time people used to go there for sliding and gliding. And Honolulu is the capital city of 7 islands where there are tea leaves are very famous. ऐसा कहा जाता है. Understand, tea leaves, the size of the leaves is just like a tea. Which tea? It is a English alphabet T. Understand, Honolulu. What is Honolulu? Honolulu is one of the, it is capital city of 7 islands. It is in Africa. Sliding is sliding, sliding and gliding. Smell is smell. Understand, bad is there, good is there, fragrance is there. Understand, खुशबू है, महक है, महक. Understand, in the same way, महक है, महक. कैसे महक होती है बाबा, आके तेरी बाहों में हर शाम लगे सिंदूरी, मेरे मन को महकाए तेरे मन की कस्तूरी. ये जो है ये स्मेल या महक. अंडरस्टैंड, फ्रेग्रेंस है. सोक है, अंडरस्टैंड, डूबना है, सोकिंग. इन द सेम वे, स्टैंड है, स्टैंड अप. अंडरस्टैंड, स्टैंड होना है. स्विम है, तैरना है, तैरना. अंडरस्टैंड, स्विमिंग. आफ्टर दैट क्या है, स्विंग है, बॉल को स्विंग किया जाता है. बॉलर स्विंग करते हैं, बैट्समैन उधर से स्विंग करके नहीं फेंकता. अंडरस्टैंड, बॉलर स्विंग करता है. स्विंग बॉलिंग इज देयर. व्हाट आर दिस, क्या है ये सब, ये सभी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के एग्जाम्पल है. ये दूसरे तीसरे कौन से खाने की चीज नहीं है. अंडरस्टैंड, अरे ये चुप एक के बाद एक बोल रहा है, उसका हिंदी में स्पेलिंग मीनिंग एक्सप्लेन कर रहा है और उसके साथ साथ एक दो गाने गा रहा है. ये क्या, कुछ नहीं है, बकवास है. इट इज नॉट सो यार. यू मस्ट अंडरस्टैंड. Understand, you must understand what are the intransitive verbs and how they are supposed to be used in the sentences. Just step by step I am saying, you don't worry about that. After that, twist है, twist. कहानी के अंदर ट्विस्ट आ गई. कैसे ट्विस्ट आती है,
जैसे कि जनरली ट्रेजेडी इज देयर, कॉमेडी इज देयर, रोमांटिक प्ले इज देयर, एंटी रोमांटिक प्ले इज देयर। एंटी रोमांटिक प्ले के अंदर ट्विस्ट आता है। कैसे ट्विस्ट आता है? ए वांट्स टू बी वांट्स टू सी वांट्स टू ए। ये ट्रायंगल है, लव ट्रायंगल। यहाँ क्या होता है? ट्विस्ट आता है। वॉक है, वॉक चलना है। आजकल क्या हुआ, जैसे कि पूरा काम ही कम हो चुका है और वॉकिंग के लिए सभी लोग वॉकिंग के लिए दौड़ना शुरू किए हैं, स्पेशली व्हाट यू कैन से इन द पेंडेमिक ऑफ कोरोना के पीरियड के अंदर बूढ़े से लेकर बच्चों तक रोड से भागना शुरू कर रहे थे। अंडरस्टैंड? क्या ना होना है? हमें कोरोना नहीं होना है। टेस्ट अगर अच्छे लगे तो भी वो बोल रहे थे वो देयर इज टेस्टलेस। Understand why? It was one type of the phobia regarding that the corona. Actually नहीं था, डर के मारे तो 80% people, you really 80% of the people, as per my understanding, they have died only because of the fear of corona. Understand? Though they were not suffering from the corona. Understand? कोरोना है, रोको ना कोरोना। उसको उल्टा करो, हिंदी में रोको ना होता है, और उसका सीधा है अंग्रेजी में कोरोना है, कोरोना। अंडरस्टैंड? वंडर है, वंडर। वंडर, WONDER, वंडर, ये चकित करना है। WANDER, वंडर, ये क्या है? भटकना है। चुप रोड के ऊपर रोमियो की तरह टपोरी। अंडरस्टैंड? काम नहीं, धंधा नहीं, सिर्फ इधर से लेकर उधर, उधर से लेकर इधर। आजकल तो यंगस्टर्स, अंडरस्टैंड, टू व्हीलर्स के ऊपर डबल सीट नहीं, ट्रिपल सीट लेके घूमते, इधर से उधर, इधर से उधर। अंडरस्टैंड? ये क्या बन गई? फैशन बन गई है। वंडर है, वंडर। वेव है, वेव। अंडरस्टैंड? ये क्या है जी? वेव, समुद्र की लहरें है। अंडरस्टैंड? ये वेव है बाबा, वेव्स। और दूसरे भी वेव्स हो सकते हैं। अंडरस्टैंड? वेव्स है। कैसे? सागर की लहरें, ओ सागर की लहरों हम भी आते हैं ठहरो। अंडरस्टैंड? ये वेव्स है। उसके बाद वर्ल है, वर्ल, घूमना है, वर्लपूल है, वर्लपूल। आफ्टर दैट वर्क इट इज, काम है। उसके बाद क्या है? उसके बाद क्या है? YL है, YLL। यल का मतलब है चिल्लाना। अंडरस्टैंड? सो व्हाट दीज आर? सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ द ट्रांजिटिव वर्ब्स। एंड आफ्टर यूजिंग इन द सेंटेंसेस, सेंटेंस के अंदर ऐसे वर्ब्स यूज करने के लिए डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। फर्स्ट थिंग माय लिसनर मस्ट अंडरस्टैंड intransitive verbs, which are the intransitive verbs and how they are supposed to be used in the sentences. You must understand, my guys, intransitive verbs are such type of the words in English whenever they used to bring in the sentences, or whenever they have been used in the sentences, at the time they are never requiring direct objects. Means what? They are shining themselves. That is very important. Intransitive, transitive is totally different. Transitive की बात अलग है। Understand? I ride the bicycle, I cut the cake. इसके अंदर ऑब्जेक्टिव होना ही होना है। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहा तो जहां जो भी कुछ एक्शन वर्ड्स है, those action words are not declared as a transitive verbs. But in intransitive verbs, what is the thing is going on? Intransitive, direct object is not required, but action is happening by the subject itself. How it is? I am teaching. Try to understand. I am teaching to you. Whenever I am teaching to you, it comes. At the time, what will be there? At the time, what will happen? At the time, when we used to teach you, at that time what happens? When that object is required, then it becomes transitive, and when that object is not required, at that time it becomes intransitive. That you have to keep it in your mind. This is very important. What is the definition? Intransitive verbs की definition क्या है? A verb that doesn't need a direct object to complete its meaning. Intransitive में कैसा है? Intransitive में यही है, a verb doesn't, what we can say, doesn't need a direct object to complete its meaning. Transitive में क्या है? Transitive के अंदर a verb required a direct object to complete its meaning. This much is the difference. Not only these, whatever that I have written over here, the words or the verbs, they are going to express the meaning of intransitive verbs. But apart from these, there are uncountable. Such type of the words are there in English which are going to express the meaning of intransitive verbs. So, how to be used these words or action verbs or intransitive verbs in the sentences, we will just discuss in our next video. Till then, take care.
If you like my channel, please guys like it and do not forget to subscribe it. Yet you have to share it. Till then, take care.